Hello friends, welcome to another video on this visa system in Australia. In this video I'm going to talk about what all work visa types are available in Australia. So mainly there are two types of visa systems available here. One is employer sponsored and another is points tested. As you can see over here, employer sponsored and points tested. So what's the big difference between these two? Employer sponsored, as the name suggests, you need employer sponsorship if you want to get that visa. Without employer sponsorship you cannot get these visas. So 482, 186, 187, all these visas, if you want to apply for, you will have to get the employer sponsorship, and you don't need these points tested. This is not a point tested visa. Also, you don't need to do expression of interest in the skill select for these kinds of visas. But there are obviously some exceptions and streams where you need this skill assessment. But this points tested, this is not called as points tested visa. In points tested, that is second category, what happens is you need to score minimum 60 points as per the points table. I have already created one video on points table, so you can check that out. So as per that points table, you need minimum 60 points to be eligible for these kinds of visas. And also you need to first submit your expression of interest in skill select program, and then you will get the invitation to apply for the visa. Without that you can't get these kinds of visas. So what visas are available here? 189, 190, 489. So all these three types of visas are available. Now we will see what is the difference between these individual visas. So in sponsorship visas, employer sponsorship visa, we have got 482, 186 and 187. 482 is a temporary visa. It is not a permanent resident visa. It's a temporary visa, and recently they have replaced 457 with this 482. So when I came to Australia, I came on 457 visa, and then they abolished or cancelled this visa 457. Now they have introduced this 482 visa. In 482 there are mainly two streams. One is short term and another is medium to long term. Short term visa you will get for 2 years, and long term, medium to long term visa you will get for 4 years. And medium to long term temporary visa can be converted into any of the PR visa. The short term visa, that category of visa, you can't get the permanent residency. After 2 years you will have to go back to your original country. You can't stay here after another 2 years. It can be renewed for another 2 years. That is, you can stay up to 4 years maximum, but after 4 years of work you will have to go back to your country. You can't stay or you can't apply for the PR visa. But with the medium to long term stream, you can get the visa for up to 4 years, and you can also apply for other PR visa available, like 186, 187, then 189, 190, etc. Now let us move on. There is 186 employer nomination scheme PR visa. There is also employer sponsored. That means you will need employer sponsorship, and that is a permanent resident visa. Next is 187. 187 is again employer sponsorship visa, but it is a regional. That means you will have to work in regional areas of Australia, and this is again PR visa. Now let us take a look at what are the points tested visas in detail. So first is 189. 189 is independent and independent PR visa, and it is very popular. 189 and 190. Difference between 189 and 190 is that for 190 you need a state sponsorship. Remember that employer sponsorship is different thing and a state sponsorship is different thing. To apply for any of these visas, you will have to get minimum 60 points as per the points table, and also get the expression of interest lodged in the skill select program. Now this 189 and 190 both are permanent resident visa, that is PR visa. But the last one in this category is 489, which is not a permanent resident visa. It is a temporary provisional visa, and it is a regional visa as well. So you have to work in the regional areas of the Australia only. And there are three streams mainly in 489. That is invitation based, just like how I said, you have to submit expression of interest, and then through skill select you will get invitation. So that is one stream. Another is extended pathway. That means if you have like other visas like 475, 487, 495, 496, these kinds of visa, then you can convert these visas into this 489 visa. And last one is subsequent entry. So 489, as I said, it is a temporary visa, but it can be converted into PR visa. That is 187. But for that you will need employer sponsorship. And to be able to apply for any of these visas, your occupation has to be in the occupation list. Okay, quickly I will मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट करता हूँ.
सबसे पहले दो टाइप के भी वर्क वीजा रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड और पॉइंट्स टेस्टेड। एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड में आपको पॉइंट्स टेबल की देखने की जरूरत है, मिनिमम 60 पॉइंट्स का जो क्राइटेरिया रहता है पॉइंट्स टेस्टेड वीजास में वो नहीं है इसमें एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप में। और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी डालने की जरूरत नहीं स्किल सेलेक्ट में। पॉइंट्स टेस्टर में उस सब की जरूरत है, आपको मिनिमम 60 पॉइंट्स चाहिए पॉइंट्स टेबल के हिसाब से। पॉइंट्स टेबल के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी डालना है स्किल सेलेक्ट प्रोग्राम में। और अब अगर इन्विटेशन आता है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ रही है, लोगों को 75 पॉइंट चाहिए, 70 पॉइंट्स चाहिए तभी उनको इन्विटेशन मिल रहा है। इवन दो मिनिमम 60 पॉइंट्स आपको स्कोर कर रहे हैं, 60 पॉइंट्स आर नॉट इनफ टू गेट द इन्विटेशन दिस डेज बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर सबमिटिंग द एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट थ्रू द स्किल सेलेक्ट। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। एनीवेज, एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप वीज़ा, अभी इसमें तीन वीज़ा है, 482, 186, 187। 482 जो है, 457 पहले वीज़ा था, उसको अभी रिप्लेस कर दिया है उन लोगों ने 482 के वीज़ा से। और इसमें दो टाइप्स के स्ट्रीम है, 2 years 4 years। 2 years में शॉर्ट टर्म वीज़ा आपको मिलेगा, ठीक है ना। और 4 years का वीज़ा जो है आपको, अगर आपका ऑक्यूपेशन मीडियम टू लॉन्ग टर्म लिस्ट में है, उस लिस्ट में है तो आपको 4 years का मिलेगा। और उससे आप PR वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं बाद में 4 साल के बाद। लेकिन इस जो शॉर्ट टर्म का वीज़ा मिलेगा आपको 2 साल का, उसमें आपको सिर्फ रिन्यू होता है 2 साल के लिए, और उसके बाद आपको घर वापस जाना पड़ेगा। उसमें आप PR वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद 186, 187 दोनों PR वीज़ा है, मतलब परमानेंट रेसिडेंटशिप, और एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप चाहिए दोनों के लिए। 186 और 187 में डिफरेंस क्या है, 187 में रीजनल वीज़ा है, मतलब रीजनल जो एरियाज है ऑस्ट्रेलिया में वहाँ पे आपको जॉब करना पड़ेगा। अब ये था एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप का वीज़ा। अभी देखते हैं पॉइंट्स टेस्टेड में क्या है। पॉइंट्स टेस्टेड में जैसे मैंने आपको बताया मिनिमम 60 पॉइंट्स चाहिए और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आपको सबमिट करना पड़ेगा स्किल्स के लिए में। उसके बाद आपको इन्विटेशन आएगा, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं इन वीज़ास के लिए। इसमें है 189, 190 और 489। 189 में इंडिपेंडेंट PR वीज़ा है, 190 में स्टेट स्पॉन्सरशिप लगती है और उसमें भी PR वीज़ा मिल जाता है आपको। इसमें डिफरेंस सिर्फ यही है कि 189 और 190 में इसमें स्टेट स्पॉन्सरशिप चाहिए, ठीक है। उसके बाद 489 ये टेम्पररी वीज़ा है, पॉइंट्स टेस्टेड, और रीजनल एरिया में आपको काम करना पड़ेगा। और इसमें 3 स्ट्रीम से इन्वाइटेड, एक्सटेंडेड स्टे एंड सब्सिक्वेंट एंट्री। इन्विटेशन मतलब ये जो नॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डाल के जो इन्विटेशन आने के बाद जो आप अप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं। और एक्सटेंडेड स्टे मतलब 475, 487, 495, 496। ये वीज़ा अगर आपके पास ऑलरेडी है तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं 489 में, और उसके बाद सब्सिक्वेंट एंट्री वीज़ा है। और 489 जो मैंने बताया कि टेम्पररी वीज़ा है, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं परमानेंट रेसिडेंट वीज़ा में, उसको 187 में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आप परमानेंट रेसिडेंटशिप आपको मिल सकता है। तो यही सब आपको बताना था वर्क वीज़ा टाइप्स में। अगर आपके कुछ क्वेश्चन है इसके रिलेटेड तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।